आपकी सिस्टर की शादी है, आपकी फ्रेंड की शादी है, आप ब्राइड्समेड हो. Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is your brown girl. If you're seeing this face for the first time, I'm the brown girl. I make content related to fashion, makeup and lifestyle. So if you haven't subscribed my channel yet, just go and subscribe right now. So in this video, we're gonna do bridesmaid makeup together and I'm gonna teach you everything about how to do bridesmaid makeup, how to achieve that perfect look and how to do it in time. इस tutorial के बाद आपको कोई भी मेकअप आर्टिस्ट, कोई भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप अपना मेकअप खुद कर पाएंगे और वो भी काफ़ी कम टाइम में. No more wait, let's get right into the video. Let's start with the makeup. Firstly, I'm applying primer. I have a dry skin, so using cream primer. Now look at the glow already. Then using one shade darker to my skin tone concealer. The best concealer ever, I must say. Now a hack, always use a setting spray before setting concealer. It just sets everything properly. Coming to foundation, taking 2 pumps of it on my hand. Now again a hack. Mix any illuminator or a strobe cream in your foundation and then apply it. It just gives you the perfect glow. Now blending it everything properly. Next applying concealer on my eyelid to prime my eyelids. Till then making my brows. I already have thick brows but still I love to shape them. Now highlighting my under eye with a light shade concealer. Blending everything properly with a brush and then using a wet beauty blender. Again using a setting spray to set everything properly. Now I am going with the translucent powder to set my under eyes and smile lines so that वहाँ पे creases ना पड़े. ये step जितनी जल्दी हो पाए उतना अच्छा है. Now working with the eyes and firstly I am going with the nudish pink color and then going up with brownish shade in the outer corners. Lastly applying this golden in the inner corners and then blending everything properly. Now I will follow the same thing on my under eyes and then I'm going on with this brown kajal. I do not like black as such, so that's why I go with brown kajal. Next up I'm going to apply lashes. तो मैं देख रही हूँ कितना सही आ रहा है and कितना मुझे कट करना है. So फिर मैंने उसको सेट करके कट किया and इस पे मैं ग्लू लगा रही हूँ and then I'll just paste. थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ रख दिया हो पलक पर, but हाँ अच्छी लगती है उसके बाद आईज. Okay, now I am applying mascara. Next up, Gal Gulabi, Nayan Sharabi, yes, blush. I'm applying a lot of blush because I love blush. So yeah, then we will apply lipstick and इसके लिए पहले मैंने gloss लगाया, जो भी excess foundation वगैरह लगा था वो सब मैंने wipe off किया and then I'm gonna outline my lips with a darker shade because I was applying this nude pinkish shade which was looking pretty. बस last step बचा है which is highlighting and yes मैंने highlight कर दिया अपनी nose वगैरह. मैंने cheeks नहीं highlight किए because I do not like that. So yeah, हो गए हम तैयार. Okay guys, तो this is the final look. आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इजी, सिंपल और ग्लोई मेकअप है. इसे आप यूं ही कर सकते हो. सो मेरी ब्राइड्समेड, अब आपको किसी भी मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये लुक आप खुद अचीव कर सकते हो. मैंने इसमें अपनी पर्सनल टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं, तो ज़रूर आप उसे इस्तेमाल करना और फिर मुझे बताना कि आपका मेकअप लुक कैसे टर्न आउट हुआ. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. डू लेट मी नो आपको ये लुक कैसा लगा. आपको और ऐसी लुक चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना एंड मैं उस पर वीडियो बना दूंगी. सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.